found the answer to your existential crisis. You found the answer. Thank you. I have yet to. I think that you should go into direction because I know you want to also. I really want to. I really would like to. Yes. I have issues, and I remember. Oh, I'm so glad I'm talking to you. I remember ये बात मैंने आपसे 5-6 साल पहले की थी रफ़ू करी के सेट पे, and I remember telling you कि I can no longer write, मुझे बहुत blocks होते हैं, and you told me you write, और I know कि अब आप एक almost published writer हैं with a huge publishing house, and I recall उस वक्त आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे short stories देंगे. अच्छा कर दिया. And this is way before you became like a huge, like published writer, and before you were signed to Bloomsbury, I think so. Now, I mean, you have to honor your word. Oh God. So आप मुझे content दें और मैं उसको direct कर दूँगी, and we'll be sorted. तो सुनिए, अगर मेरी कहानियाँ बहुत bold हैं, ठीक है? Bold, italicized, underlined, capitalized. और मुझे ये word अच्छा भी लगता है कि bold है. तो आप कर लेंगी direct मेरी bold कहानियाँ? 100%. I also think कि आपने कभी Persian cinema देखा है? जी देखा. So because they're so suppressed and because they don't have a lot of ways to sort of express certain things, they do so in a very artistic and symbolic way, which I love. Which is the case with our writers from the golden era, from the 80s, 90s, कि काफ़ी चीज़ें हम नहीं कह सकते थे और बड़ी खूबसूरती से कह देते थे. So I think that in itself is a challenge. लेकिन अगर आपकी stories आपने international market के लिए बनानी है तो मैं कर दूँगी shoot board. मुझे मतलब streaming devices पे तो आप डाल सकते हैं ना content? बना दूँगी. क्या maximum क्या हो जाएगा? मतलब lynch हो जाऊँगी. मतलब आपके पास तो Canadian passport है, मेरे पास सिर्फ पाकिस्तानी passport है. You don't have a blue passport. No, you don't get to have that. Everybody thinks I do. I don't. No, but अब तो आप वहाँ रहती हैं, apply for it. अभी नहीं किया ना, मैं अभी आई देखिए पाकिस्तान में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ. अब जाऊँगी तो देखेंगे 5 साल लगते हैं. Especially अगर ऐसी stories लिखनी है और बनवानी है तो ले लो पास. हाँ, मुझे सब यही कहते हैं कि कोई exit option होनी चाहिए. उष्णा, आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में डबल स्टैंडर्ड्स हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए? मुझे लगता है कि हमारी हर चीज़ में डबल स्टैंडर्ड्स हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के लिए और मर्द और औरत के लिए. तो बताएं ना. मतलब इस बारे में मैं अगेन बात कर चुकी हूँ, बट डबल स्टैंडर्ड्स हर लिहाज से हैं. पे गैप्स अगर आप देख लें हैं, जितना भी आप डिनाई करें हैं, और किस लिहाज से, जस्ट ट्रीटमेंट ओवरऑल, जस्ट द वे वी आर परसीव्ड, what we can get away with, men can get away with so much more, and we can. I do think that when an actor comes on set and he's in a bad mood for whatever reason, और वो थोड़े से introverted हैं और वो अपनी energy conserve कर रहे हैं, जो भी उनका reason हो, तो उनको लोग ये नहीं कहेंगे कि ये cold हैं या ये बदतमीज हैं. अगर एक अदाकारा आएंगी और वो सबको जफियानी डालेंगी और प्यार नहीं करेंगी और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बैठ के स्वीटली नहीं रहेंगी तो she is rude and she's अच्छा. When I'm working, I'm extremely matter of fact. I'm very like to the point. और ये सिर्फ ड्रामाज में नहीं, हर जगह मेरा एटीट्यूड हर चीज़ को लेके जब मैं प्रोफेशनल जोन में होती हूँ वो ऐसा होता है. एंड आई रियलाइज यहाँ पे अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ किसी ग्रुप में या कहीं पे भी, या इफ आई एम डीलिंग विद मेन पर्टिकुलरली, unless I sugarcoat my sentences with a smiley face or a can you know, unless I really do it up like that, I'm considered just in poor taste, and I'm considered like I'm just not. I mean, there's a word for it, but we can't. We can't use that word. So I was looking for a word. So it's really frustrating, and I refuse to act like that, because if I'm working with other women and we're blank and we're whatever, then we're fine with each other. It's okay. We're getting work done. We don't have to be unprofessional and take it to that level. लेकिन अगर आप बहुत straight up बात किसी मर्द से करें तो उनकी egos अच्छी खासी, काफ़ी, हर मर्द नहीं लेकिन काफ़ियों की ego bruise हो जाती है. I've noticed that. And it's not just in our line of work. मुझे औरतें कहती हैं, it's in every line of work. There's nothing more fragile than, the ego of a certain type of man from a certain country. हमारे फील्ड में ईगोज बहुत होती हैं. मतलब कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग कहते हैं बहुत सेंसिटिव और हसास लोग हैं, लेकिन हमारी ईगोज भी अच्छी खासी टॉकेटिव होती हैं हमारे सर में. आपको लगता है, is this specific to actors and artists, or do you think that egos are rampant throughout? I think ego is everywhere. Ego is the number one destroyer of self, and I'm studying it now. Especially I'm doing a lot of self work to understand कि अपने अंदर मैं चीज़ कैसे ख़त्म करूँ, because I think एक fine line होती है self respect में और self love में और ego में. और आपका ego जो, it's almost like a third personality. It's shattering away in your head. It's shattering away and it's destroying so much of your inner peace. So कुछ ego होता है जो बहुत external होता है और जो नज़र आ रहा होता है दूर दूर से, और उसको तो हटाना चाहिए बिकॉज वो लोगों को ऑफेंड करता है. और एक ईगो की और फॉर्म है जो आपको अंदर से बिल्कुल खा रही होती है और जो आपको बहुत इनसिक्योर बना देती है.
So I think that needs to be worked on. Or as actors, because हमारा ego consistently inflate किया जाता है, और वो एक inflation temporary होती है, inflate or deflate or inflate or deflate. So हमारी self worth लोगों पे depend होने लग जाती है, और वो लोगों का opinion इतना fleeting होता है because वो लोग आपकी family नहीं है, and you know, so it's very fragile, and we have to make a cocoon and stay within it and not let the external factors destroy us, because they completely destroy us. It took me a long time because I wasn't exactly taught these tools. You know, I've been by myself here for a while, so it took a lot of self-work to figure this out, and it completely changed my life once I did. And it's always a work in progress. I'm a complete work in progress. But yeah, we definitely have an ego, and we need to work harder to fix that because it can destroy us more. I'm also on that journey, and I've spoken about it at length, so on every show I mention it, so maybe I won't mention it here. But what are the things that trigger you? What are the things that trigger me? I've worked on my triggers enough to... Okay, so I was triggered recently, and I was triggered after a long time. Somewhere, someone had said something about my family, something about my parents, and so that was a major trigger for me, and I reacted to that. And I hadn't reacted in a long time to something. And I realized, and that made me realize that this is my weak spot. So this is like 8-9 months ago, a year ago. So I was able to work on that insecurity and pain to make sure that I'm not again triggered by that. So far, जो भी मेरे ज़िंदगी में triggers रहे हैं, मैंने उनको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है. But I used to have many triggers. Ab, if I have a trigger, it's usually animal abuse and people justifying animal abuse. That's my trigger. That's something I do react to. Yeah. But that's about it. I don't have that many triggers. What about you? What triggers you? Yeah, I get very reactive when somebody says they'll do something and then that doesn't happen. So like, I try and say what I will do, like showing up on time, for example. Like I get late also, but it's important to let me know if you're running late. Just let me know that you're running late. Let you know, yeah. And then I'll like be like, theek hai. Or if I'm running late, I'll try and like say that I'm running late to whoever. Yeah. So that uncertainty, you know, when like for example, I'll tell you a huge trigger. When the assistant director calls me at night and says, boss, aapke paas subah 9 baje gaadi pahunch jayegi. अब मैं 8:30 बजे उठ के नहा धो के 9 बजे तैयार बैठ जाऊंगी. फिर गाड़ी आएगी 10:30, 11, 12 भी आ सकती है. और मैंने देखा है बाकी एक्ट्रेसेस वो फोन ऑफ करके सो जाते हैं. और तो मैं वो इडियट हूँ जो अभी भी अब फिर मैं पूछने लग जाती हूँ कि सुनिए 9 बजे का मतलब है 10 बजे 11 बजे. और वो कहते हैं कि नहीं बॉस कंफर्म्ड है. खैर आई एम आल्सो लाइक ठीक है, मैं जो भी आई मैनेज टू डील विद इट. बट इट्स अ फॉर्म ऑफ एंजाइटी. I think 6 or 7 years. But you haven't been doing it consistently, No, right? I haven't. Okay, so this was me years ago.